started the classes. Sorry for the late. We have just tried to fix the technical issue that has been resolved. चलिए start करते हैं हमारी class. एक बार जल्दी से confirmation दीजिए chat box में that my voice and video both are clear with you and we can start the class. Very good morning, Sharda. Okay, great. All clear है? Let's begin the class. Now today we are going to solve another question paper. आज हम जिस question paper को discuss करेंगे, ये question paper जून 2023 का है. तो let's begin. Very good morning everybody. Very good morning. Let's begin. चलिए सबसे पहला सवाल हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स आर एसोसिएटेड विद जॉन रॉल्स? इनमें से कौन सा कंसेप्ट जॉन रॉल्स से संबंधित है? So I'm going to start the poll for you. Your time starts now. Read the question and answer. Okay. So veil of ignorance, primary social goods, pure procedural justice. These are the three statements which are correct. So right answer होगा option A, which is only option that is not included in it. It is principle of organization. So सही जवाब है option A. ठीक है. Next question. I think my screen is not visible. Now next question. Savarkar became the president of Hindu Mahasabha in the year. 1935, 37, 40, 45. So the right answer will be option 2, which is 1937. So सही जवाब होगा option 2, B, 1937. Next question. Which of the following statements are incorrect regarding new public management?
NPM have attributes like raw bureaucratic power, internalization, and concentration. So D is right. Who among the following rejected the claim of universal sisterhood? इनमें से किसने यूनिवर्सल सिस्टरहुड, सार्वभौमिक बहनपा को अस्वीकृत किया? ब्लैक फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट, लिबरल और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट? ओके, सो यूनिवर्सल सिस्टरहुड और ब्लैक फेमिनिस्ट्स का दोनों का विचारों में डिफरेंसेस ये थे कि ब्लैक फेमिनिस्ट्स आर नॉट ओनली फेसिंग द इश्यूज ऑफ बीइंग अ वुमन बट ऑल्सो दे आर फेसिंग द इशू ऑफ बीइंग अ ब्लैक एज वेल. सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्लैक फेमिनिस्ट. Which among the which amongst these resolutions were not concerned with minority rights? माइनॉरिटी राइट्स, देखिए ट्रिपल तलाक बिल जो 2018 में आता है, दैट वाज द बिल रिलेटेड टू द विमेन, मुस्लिम विमेन, नॉट द माइनॉरिटीज इन जनरल. सो इसमें डी कैंसिल करेंगे, डी को आप स्किप करेंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन डी. So A, B and C is right. Who among the following described 12 types of colonialism? Nancy Schumacher, option A. Match the column. Label as Raid Buster, Chiseler, Squiller, Inspector. ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन. Raid Buster, one who does not much, does not do, one who does too much of work. बहुत ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति रेड बस्टर. ठीक है. ओके, बी चिजलर, वन हु डज टू लिटिल वर्क, जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, वो कहलाता है चिजलर. स्क्विलर, वन हु कंप्लेन्स अबाउट कलीग्स टू सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर को कॉलीग्स की कंप्लेन करता है. एंड एन इंस्पेक्टर हु मेंटेन सोशल डिस्टेंस और एक्ट ऑफिशियली. ठीक है. सो सी इज राइट. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. Which of the following association lashed out as Maoism or branded as Hawthorne researcher as cow sociologist? Hawthorne experiments को किस थिंकर ने या हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के रिसर्चर्स को किस थिंकर ने काउ सोशियोलॉजिस्ट कहा है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने? That is United Auto Workers in the USA. B is the right answer. Arrange the following in the chronological order according to the establishment year.
ओके सो अनुराग का क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट 1940. सो बेसिकली सावरकर प्रेसिडेंट बनते हैं हिंदू महासभा के 1937 में, जो 1942 तक प्रेसिडेंट रहते हैं. ठीक है, तो 1940 में वो पोस्ट ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं. देयरफॉर द राइट आंसर विल बी 1937. ओके, नॉट 1940. ओके, इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं. तो शक्ति समिति, विमेन्स इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया. सो Shakti Samiti that has started in 1886. The oldest one is Shakti Samiti 1886. So A will be considered the first one. ठीक है. Second होगा the Women's India Association 1917. Women's India Association 1917. फिर है D, that is National Council of Women in India 1925. National Council of Women in India 1925 and All India Women's Conference 1927. So correct answer is option C. Okay, option C is the right answer. Next, Henderson Brooks report is related to which of the following? The US India Nuclear Pact 1962, Sino-India War, emergence of BRICS nation, Central Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Okay, this report was related to the India-China War 1962. So B is right. Which of the following statements are correct about G20? It has 20 sovereign nations only as its members. G20 में सिर्फ nations आते हैं? Absolutely not. G20 group of 20 is a group of 19 countries plus EU. एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और अभी अफ्रीकन यूनियन भी ज्वाइन कर चुका है ना. तो देर आर टोटल 19 कंट्रीज एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर सिर्फ 20 सॉवरेन देश आते हैं, तो ए कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. और सही जवाब होगा ऑप्शन बी सी डी. करेक्ट. Next, which of the following pair is incorrect regarding the special powers of the governor of the various states? Maharashtra separate development board for the Vidarbha and Marathwada, Telangana separate development board for Rayalaseema region, Assam administration of tribal areas in the state, Manipur regarding the administration of the hill areas in the state. Yes, B is the right answer. B is the right answer. That is Telangana Separate Development Board of Rayalaseema region. Which of the following statements are correct regarding post-behavioralism? Regarding post-behavioralism. Question 11 का C option कैसे? B. B is the right answer, no? B, not a C. B is the right answer. हमने B choose किया है, C नहीं choose किया है. Post-behavioralism इज अ टेक्निक. देखो, बिहेवियरलिज्म में क्वांटिफिकेशन साइंस मेथडोलॉजी का इस्तेमाल होता है. पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्वांटिफिकेशन का इस्तेमाल नहीं होता है. टेक्निक एंड क्वांटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना. तो डी इसमें से कैंसिल कर देंगे. सही जवाब होगा ऑप्शन डी विच इज ए, बी एंड सी. Which of the following scholars observe various forms of Nehruvianism, militant Nehruvianism, classical Nehruvianism, and post-Cold War Nehruvianism?
ओके, इसका सही जवाब है स्टीफन कोहेन, अ वेरी प्रोमिनेंट political scholar, political thinker, Stephen Cohen, who basically describes the difference between different types of Nehruvianism. So उनका काम नेहरू और नेहरू की आइडियोलॉजी पे रहा है. So Stephen Cohen. Which of the following is not listed as classification of colonialism given by Nancy Shoemaker? अभी हमने एक क्वेश्चन कवर किया जिसमें हम देखा दैट नैन्सी शूमेकर ने 12 टाइप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म को डिस्क्राइब किया. इनमें से कौन सा कॉलोनियलिज्म उनके अनुसार सही नहीं है? एक्सट्रैक्टिव, ट्रेड, लीगल, कल्चरल. ओके, सो सही जवाब है ऑप्शन डी विच इज कल्चरल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू गांधी देर इज नो रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स. एंड जस्टिफाइज द मीन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड्स एंड मीन्स आर इंटर रिलेटेड. इससे गांधी की आइडियोलॉजी का पता चलता है दैट गांधी डज नॉट बिलीव इन ओनली इन द एंड ऑफ, ही इज नॉट ओनली बिलीविंग इन द डेस्टिनेशन, ही ऑल्सो बिलीव्स इन जर्नी. वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम, गोल को अचीव करना ही नहीं बल्कि उस एम और गोल को अचीव करने के लिए जो साधन अपनाए जाए, साध्य और साधन दोनों को ही जस्टिफाई करना उचित समझते हैं. तो एंड्स एंड मीन्स, अंत, साध्य और साधन दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है. तो डी इसका सही जवाब होगा, जो कि गांधी की फंडामेंटल आइडियोलॉजी है. हु अमंग द फॉलोइंग सेड, किसने कहा है द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप हैज गॉन आउट ऑफ फैशन अमंग पॉलिटिकल थिंकर्स. राजनीतिक विचारों के में नागरिकता की संकल्पना अब प्रचलन के बाहर हो गई है. वोगल एंड मॉरन, वैन गन्स्टर्न, हर्बमास या गैल्स्टन. देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, इन्हें सिर्फ आपने रट लेना है, पढ़ लेना है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह रिपीट होते हैं तो यू कैन आंसर. बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आई विल नॉट से कि इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, बट जिस थिंकर ने स्टेटमेंट दिया है उसे याद कर लो. इसका सही जवाब है वैन गन्स्टेन. ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हु कॉल्ड नेहरू पटेल प्रसाद एंड आजाद एज एन ओलिगार्की विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. किसने कहा है कि नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद को संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र के रूप में देखते हैं? ग्रामवेल ऑस्टिन, मोरिस जोन्स, आइवियर जेनिंग्स या केसीवियर. ग्रामवेल ऑस्टिन, ऑप्शन ए. Which of the following are correct with regards to neorealism in international politics? ठीक, इसमें द सिक्योरिटी डिलेमा कैन बी कॉल्ड एज बिल्डिंग अप स्टोर्स मिलिट्री वेपन्स फॉर ऑफेंसिव पर्पसेस. डी इसमें इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर होगा ए बी सी विच इज ऑप्शन ए. लेट मी सी हाउ मेनी आर यू गिविंग द राइट आंसर्स. ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर गिविंग द राइट आंसर्स. ग्रेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट इट इज बेटर टू सफर रॉन्ग देन टू डू रॉन्ग. किसने कहा है कि गलत करने से गलत बर्दाश्त करना बेहतर है? ठीक है, गांधी, हैना आरेंट, हेबमास, अंबेडकर. सही जवाब है ऑप्शन बी, शाबाश, हैना आरेंट, जिनका कहना है कि गलत करने से गलत बर्दाश्त करना बेहतर है. ठीक है, सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू, ओनली 50%. ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग
right are declared as fundamental rights under Article 21 of the Indian Constitution? Right against public hanging, right to sustainable development, right to livelihood, right to reputation. ऑप्शन डी देखिए, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 16 years of age, नो 14 years of age. सो डी इज नॉट राइट, इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करेक्ट.